हेलो, मैं हूँ आयशा तूर और आप मुझे देख रहे हैं फरवा भाभी के तौर पे कैसी तेरी खुदगर्जी में. आई एम राइट नाउ हियर विद समथिंग हॉट. इफ़ यू वांट टू वॉच द इंटरव्यू, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the bell icon and catch me with something hot and Amna. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना. आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज़ हॉट टॉक विद नन अदर देन आयशा तूर. मैं उनको जानती हूँ एज ए म्यूज़िक एंड एज ए फैशन पर्सनालिटी. आजकल शी इज़ अ टेलीविज़न पर्सनालिटी, और वो भी शी इज़ अ वेरी पॉपुलर टेलीविज़न पर्सनालिटी. पॉपुलर ऐसे कि पीपल आर लविंग टू हेट ऑन हर. शी इज़ फीचरिंग एज फरवा द भाभी in one of the, in fact, in the most popular TV serial on air these days, Kaisi Teri Khudgarzi. Aisha, how does it feel to be the Farwa Bhabhi? And which is so not who you are, I mean. अब ना शॉकिंगली मेरा ख्याल था इतना नेगेटिव कैरेक्टर है तो बहुत ज़्यादा लोग नफ़रत करेंगे, हेट मेल आएगी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे. एक आध हेट मेल भी आई है. बहुत ज़ोरदार हेट मेल आई है बिकॉज हम हेटर्स भी हैं ना अच्छे खासे. बट लोगों ने इतनी तारीफ की है इसकी ना. आई कीप थिंकिंग नेगेटिव कैरेक्टर है. अच्छा खासा एक मासूम सी दुर्रे फिशा और एक इवल सी फरवा भाभी. But people have really they've liked it. They've liked it. Well, you're playing it very well. Thank you. And somehow it I mean, acting comes really naturally to you, but this kind of role, I would be very surprised, and I was, to see you in it, because you've been doing television for a couple of years now, but I still see you as who you are dressed right now. But to do the dupatta and how is all of this happening? How is your career happening? I mean, you used to be a Bettinar person. What happened then? I think my career is happening simultaneously with what's happening with the country. Yeah. एक वक्त आया था जब अच्छा खासा प्रोग्रेसिव था पाकिस्तान. मीडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव था. ये वाले इश्यूज नहीं होते थे कि शर्ट जो है वो अब यहाँ तक होनी चाहिए, या अगर आपके बाजू नज़र आ गए तो एकदम से कौम की खुददारी जाग गई है. यू नो, इतने इश्यूज नहीं होते थे जितने उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होते थे. एंड आई फील लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग इश्यूज के साथ साथ शायद लोग ज़्यादा क्रिएटिव थे. वक्त लेके कंटेंट क्रिएट करते थे. शायद पहली दफ़ा इतनी आज़ादी इतने अरसे के बाद मिली थी कि हम कुछ कर सकते थे. Post Zaya, 90s, early millennium. And then Ghazanfar Saab happened, Indus Vision happened, and all of us बच्चास जैसे जो हमारा दिल चाह रहा होता था, जो हमने सारी ज़िंदगी चीज़ें देखी थी, we could actually put it together and make shows, and he gave us the liberty, the creative liberty to go ahead with it. I think फिर उसके बाद जियो शुरू हुआ था. आग चैनल, नो आई एम फॉरगेटिंग, आज टीवी, जिस पे हम सब ने वी ऑल वर्कड ऑन इट. अगेन क्रिएटिव कंटेंट, पीपल वर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स. इट वाजंट अबाउट टीआरपी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एग्जैक्टली. So again, younger people getting together, stepping out of the box, coloring out of the lines. सारे creative schools से पढ़ के सब लोग आए हुए थे. And then what happened? Then Aag happened. Then ARY. So every time I feel like I've been part of the beginning of every channel. And so every time they'd start something, the idea was to be creative. The idea of making money, and so much money as an industry, I think is happening now. And it's destroying the creative pursuit of making content, I feel. I'm not, as an artist, मैं तो artist हूँ ना, मैं तो actor हूँ. मुझे क्या पता कि ये लोग कितने पैसे बनाते हैं या इनकी रूलिंग कितनी है. हम लोगों के जो बजट्स थे उस वक्त इतने नहीं थे, अब हैं बजट. सो वी हैव टू टेक इट्स वेरी सीरियसली, एंड पीपल डू. इट्स अ जॉय टू वर्क विद द न्यू आर्टिस्ट. बट एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमें क्या पता कि एक ड्रामे के कितने करोड़ों रुपए बने. हमारी जिंदगियों पे इतना फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. लेट्स dive into Kaisi Teri Khudgarzi. How did that happen?
So I have, in the last 4 or 5 serials I did with Abdullah Seja. Right. And for a very specific reason as well. एक तो ख्याल बहुत रखता है अब्दुल्ला अपने सारे आर्टिस्ट I Dreams. आई ड्रीम्स. उसके बाद कभी आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं. अगर कोई चेक आगे पीछे हो जाता है तो अब्दुल्ला अपने पर्सनल अकाउंट से आर्टिस्ट की पेमेंट्स कर देते हैं. एंड ही इज़ वेरी तमीज़दार. फिर उसके बाद वो जो स्क्रिप्ट्स आपको देते हैं खुद बैठ के बात करते हैं. मेरा एक अच्छा खासा उनके साथ कंफर्ट लेवल हो गया था बिकॉज मैंने और किसी के साथ 4 साल तक काम ही नहीं किया. सो देन व्हेन ही टोल्ड मी द स्क्रिप्ट, 1-2 चीज़ें पूछी मैंने जो ज़रूरी थी. मैं आई कांट इमेजिन कि आपने नहीं पूछी होंगी बिकॉज मेन कैरेक्टर को लेके तो बहुत से सवालात हमने रिव्यूज में भी बोला कि अच्छा, you've spoken about it. Okay. We have specifically we said that, and I even tweeted about this, that Shamsher's character is like a caricature of a Zahir Jafri, because it is exactly that somebody goes after somebody and then all this toxicity and this awfulness and stalking behavior and aggression and assault, and he's pretty abusive. And this doesn't continue and become romantic. This continues and becomes tragedy. So why are they glamorizing it, and why are they presenting it as, oh, this is a love story? I assume that you would have asked the same questions. I did. I asked a lot of questions because exactly उसी वक्त आमना 2-3 महीने पहले जाहिर जाफर का केस हुआ था. और वो काफ़ी ब्रूटल था. वो अभी तक चल ही रहा है. और एक्चुअली अगर आपको याद हो आमना, तो खाली जाहिर जाफर वाला केस नहीं हुआ था. उसके बाद मीनारे पाकिस्तान वाली कहानी हुई थी. फिर 1-2 चीज़ें और इस तरह की हुई थी. Khadija Siddiqui's case, the stabbing case happened. The stabbing case before that happened. We've had so many examples, unfortunately. We did, and that one year, everything culminated. And I feel like the Pakistani women encountered a collective trauma at that point for those few months. Every time I'd go to my yoga class, or I'd step out to another counseling class, it felt like women were huddling together and protecting each other. And I think for the first time I felt connected, because जब भी कोई इतनी बड़ी tragedy हो जाती है, because थी मेरे लिए tragedy, I felt it. I really deeply felt it. उसके बाद जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब किस तरह आप इसको कैसे दिखाएंगे, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इस कैरेक्टर को. ये हीरो कैसे बनेगा. और मुझे फिर जब मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ये नहीं समझें कि ये ऐसे ही एक बहुत कुछ होगा, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, और ये ट्रेजेडी ही है, ये कोई बहुत हीरोइक लव स्टोरी नहीं है. ऐसे ओके, अब मुझे मेरा कैरेक्टर बताएं. So then he told me my character. स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ ली. थोड़े से मुझे इश्यूज थे, थोड़े से नहीं अच्छे खासे थे. कभी कभार सीन्स में हो जाते थे, कभी डायलॉग में हो जाते थे कि देखें इस तरह नहीं बोलता कोई. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मतलब जिस तरह मैं बात कर रही हूँ आमना, यू डोंट स्पीक लाइक दैट ईदर. हम अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं. बट सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ नुमान एजाज थे, मेरे साथ अतीका थी, दानिश और दुरे के साथ. मैंने दानिश के साथ बहुत पहले काम किया था जब वो बहुत ही छोटा सा था. दुरे के साथ मैंने नहीं किया था. बट माई मेन थिंग वॉज आई एम वर्किंग विद Numan Ejaz and Atika. Mostly Numan Ejaz also, because every time I've worked with him, he brings out the artist in me that I don't think ever even exists. So that was, for me, that was the most attractive thing. और आप यकीन करें कि हम सीन्स करने से पहले रिहर्स भी करते थे, फिर उसके बाद हम लाइनें भी चेंज करते थे. डायरेक्टर आते थे, उनसे अप्रूव करवाते थे. सीन्स बैठ के, अच्छी बात यह है कि हमने सीन्स बैठ के, आई डोंट नो कि इस वक्त तक कहाँ ये स्टोरी आ चुकी है, बट हमने बहुत चीज़ें शिफ्ट की हैं. सो इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू प्ले सर्टन पार्ट्स. फॉर इंस्टेंस, जब मेरे मुंह पे पहली एपिसोड में, दूसरी में पानी गिरता. मैंने I was going to ask you about that scene. पानी. How many times did you take the water? Twice. You did it? Twice, yeah. Okay. So, have you met Dure? I have. Dure is a तमीज़दार प्यारी सी लड़की है, तो उसका वो भी अहमदी क्यों पानी क्यों फेंक रही है, अच्छा नहीं लगता, बदतमीज़ ही लगती है. एंड हम लाइक पानी क्यों फिर फेंक पा रहे हैं, उससे से बोल दे, क्या ज़रूरत है.
And then he's like, बहुत ज़रूरी है, आप गुस्से से पागल हो जाती हैं बाद में. नहीं, but that's true. अगर वो पानी नहीं फेंका होता तो वो हाँ, उसको जो ये होता कि निकालो इसको, हाँ, that wouldn't have made sense. It It's a wouldn't personal humiliation that she's reacting to basically. तो वो पानी तो makes sense. वो one of the few things that, few things, yes. that does make sense. I got lots of phone calls and everybody was like, तुम्हारे साथ असल जिंदगी में कोई ये करे तो तुम क्या करोगी? हाँ. Like, I don't know, कभी हुआ नहीं. हाँ. Nobody's done that. कभी नहीं किसी ने फेंका पानी. नहीं. Why would anybody do that? it? हाँ. So that was, we sat down, talked about that, हो गया. फिर कौन सा एक point था जब मेरी एक line थी आमना, my favorite line. हाँ, मैं बता दूं, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं कि वो कह रहा है कि मुझे वलीमा आप करें ताकि इस महक की ज़िंदगी आसान हो, और वो कह रहे हैं वलीमा नहीं होगा, और अब शेरू वापस आ गया है. यहाँ तक स्टोरी पहुँची है. हाँ, योर फेवरेट लाइन. I think अगर मैं बता दूं तो शायद मैं बोल चुकी हूँ सीन में. चलो नहीं भी बोला तो क्या हुआ, I'm telling you. So I call my mother and I say something of the sort, मम्मी आपको तो पता है मुझे इन गरीब लोगों से कितनी घिन आती है. हाँ. मेरी I'm like मैं नहीं बोल रही. मैं नहीं बोल रही. मतलब ये ऐसे कौन बात करता है, तो बहुत बुरी बात है. ये तो कोई बहुत ही बुरा इंसान होगा, वो भी नहीं ऐसे बोलेगा. सात पुश्तों के नवाब तो ऐसे नहीं बोलते. कोई नहीं बोलता. और वो भी नवाब दिखा रहे हैं. So I was like मैं नहीं बोल रही. And then the director sat me down and said, आयशा जी ये आप नहीं हैं, ये आपका कैरेक्टर है, आपको बोल दें, कैसे बोलना चाहती हैं. So मैं गुस्से में थी. I'm like मैं ऐसे ही बोलूँगी इसको, यही बोलूँगी. So I said it. Sometimes there is that. But yeah, I mean, no, the thing about Farwa is that she's a negative character. She's portrayed as a negative character, and she's perceived as a negative character. There's nothing wrong with that. These people do exist in the world, and you know we need to see negative. And frankly speaking, they add flavor. Negative characters add that little bit of flavor to an otherwise straightforward story. It's when you give a negative character packaged as a hero that is the problem. Asal problem to wo hai. Okay, I saw this is an abusive character. Yeah. Danish's Chamsher is an abusive character. वो खुद कहता है. वो खुद कहता है. And again, my point was, अगर मेरे अब्बू से कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर देता था, तो I would get deeply offended कि आप मेरे अब्बू से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं. I would take it personally. And I was just thinking कि आपने इस ड्रामे में दुर्रे के शहूद को मारा है, उनको जेल भेज दिया. It's unforgivable. For me, it's unforgivable. So मुझे नहीं समझ में आया कि एक टॉक्सिक अब्यूसिव कैरेक्टर को आपने एक हीरो बना के आशिक बना दिया. And it's wildly popular in people. They love Danish's I know. I mean, character. look at the numbers. Absolutely. And between men and women both. It's not like that women are standing up and saying, no, this is harassment. This is sexual harassment. Yeah. You know, this man is stalking. Physical harassment. Yes. Yeah. Harassment on so many levels. So many levels. But all the comments I get, they love Danish, they love his character, they think this is what love is because this is what Southeast Asia, the subcontinent cinema has been like that. Yeah. Like our old Pakistani films were the biggest expression of love is the hero slapped the heroine, she slapped him back and they've fallen in love. So our love is just really aggressive and really abusive. Would you call it passionate? No, it's disgusting. Please, it's disgusting. Restraining order hona chahiye. Can we differentiate between passion and disgusting? Consent, right? Consent. सबसे ज़रूरी चीज़ तो consent है. Consent. अगर दो लोगों के बीच का प्यार aggressive भी है और consent है तो that's passion. But अगर दो लोगों के बीच में एक बंदा is not a willing partner और दूसरा अपने आप को enforce कर रहा है तो it's harassment. It's disgusting. It's criminal actually. It is. It's criminal behavior. Yeah. It is. Absolutely. And I also feel like we not only glamorize and package that, we also glamorize the marriage, the institute of marriage to the extent when you are in an abusive, toxic relationship, you still don't walk out because divorce is still frowned upon. Yeah. Whether it's a man or a woman. For a woman, it's worse. Yeah. But ड्रामों में हम यही दिखा रहे हैं, इतना कुछ हो जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप बेटी पैदा हो जाती है तो आप टॉक्सिक मैरिज में वापस आ जाते हैं. शादी होती है तो एकदम से ऑटोमेटिकली मोहब्बत कैसे हो जाती है.
उसी इंसान से जिससे आप नफरत करते हैं शादी से पहले उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, शादी होती है तो सब सही हो जाता है. How? You tell me. I don't know. How does that happen? Haven't you studied like therapy or something? Haven't you been trained to decipher this? I was going to ask you that you studied this and you should be qualified enough to analyze why people are in love with these characters. And it's not just Shamsher and Kaisi Teri Khudgarzi. It's like so many actors. I mean, so many roles that Feroz Khan has played, for example. टॉक्सिक हीरोज इन 2, 3, 4, 5 ड्रामाज. दानिश का पहला थोड़ी है, इससे पहले भी 2-3 ड्रामा में दानिश ने ऐसा ही किरदार किया है बिल्कुल, जिसमें अग्रेसिव और शादी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है. तो पीपल लव दीज कैरेक्टर्स. यू टेल मी व्हाई. आर दे इन लव विद द स्टार्स, विद द एक्टर्स, और डू दे just feel it's so romantic? I think they think it's romantic. They think so? They think it's romantic. That is the way to... That's very disturbing. It's worrying, actually. It is. It is. Because again, dating is taboo. Meeting men and women together, putting boys and girls together is taboo. Yeah. So they hide it and do it. When you hide things, when it's undercover, there's that element of wrong. And then you take it to another extreme. A wrong is a wrong. Two wrongs don't make a right. Here we put two wrongs together and try to make a big right to justify everything. But where the psychology of these characters is concerned, the running joke between us is that एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी हमारी कौम के लिए. पाकिस्तान की साइकोलॉजी, पाकिस्तान इंडिया दोनों की, इनकी साइकोलॉजी के लिए अलग किताबें, एक नए फ्रॉइड को जिंदा होना पड़ेगा who just write about us, just us. Because इंडिया में भी आपने देखा Kabir Singh was like this. Kabir Singh था क्या था? I don't know, I haven't seen that Shahid Kapoor did this character. Was extremely toxic. यही exactly यही चीज़ थी. सबने कहा कि oh God, ये तो हीरो नहीं है. How dare this misogyny at its worst. हम तो पेल रहे हैं, हर रोज ड्रामों में यही कुछ हो रहा है. और औरत इतनी लाचार कब से हो गई? पता नहीं वो कहीं से. अच्छा हम ना, अच्छी बात ये है, आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ. अच्छी बात ये है कि क्योंकि मैं मेन लीड का कैरेक्टर नहीं कर रही हूँ, तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन होता है ना कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं आगे, वो मुझ पे नहीं आता. बिकॉज मेरे कैरेक्टर की डेफिनेशन मेरे लिए सीधी सीधी थी इस प्रोजेक्ट में. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको शोल्डर करना है वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स जो आपके मेन लीड हैं वो हैं. For me it was just an amazing learning experience because I was working with Numan Ijaz after such a long time. तो वो हर सीन से पहले मुझे बिठा के रिहर्स करवाते थे, और जिस तरह मैंने कंसीव किया हुआ था वो बिल्कुल अलग था, जो इन्होंने मुझे बताया वो अलग था, जो डायरेक्टर ने बताया वो अलग था. So I had to put all these three together. He actually sits down with artists and talks about scenes, or just you? Just me. Okay. Because I'd ask him, I'm like, अच्छा ये क्या हो रहा है बताएं. And then I'd notice him, I'm like, ये जो आप पहले यूं देख रहे होते हैं, and then suddenly इसका क्या मतलब है, ये क्यों किया आपने, आप समझाएं. And then Tipu and I would copy him, and we'd fluster him a bit also, but he'd also get flattered कि इतना गौर से कोई किसी के craft को देख रहा है. So then he'd sit me down, and then he'd be like, तू जो अभी ये कर रही थी ये मत कर, अब तू ये कर. And very basic things आमना. For instance, हम, अगर आपने कभी नोट किया हो, तो हम खाने की टेबल पे बैठे हुए होते हैं तो हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं. Whereas in real life, I will pick up the mug. I will talk to you. And take a sip of chai. Take a sip and speak to you. So he's like, कितनी एक्टिंग करनी है, शौक नहीं पूरा हुआ तेरा, अब मत कर. And he'd take my script away, wouldn't let me learn the lines. And he's like, you know the gist, do it now and eat. I was like, डायरेक्टर अभी मना करेगा कि ये आपका क्या बोलते हैं, क्लास नहीं आ रही है आपकी कैरेक्टर में. So he's like, नहीं, you do it. And I did it, and I really enjoyed it. And these are very basic, small things. Like when I'm talk, I express with my hands also. Farwa bhabi doesn't. And I'm like, उसके हाथों को क्या हो गया? हाथ कहाँ है इसके? टूट गया उसके हाथ. टूट गए. So for me, it was a learning. But Farwa bhabi's sister is another toxic character. कि लड़कियों को समझ क्यों नहीं आती कि अगर एक को मोहब्बत हुई है दूसरे को नहीं हुई, तो that doesn't count as तुम मेरे हो. The तुम मेरे हो syndrome और मेरे नहीं हो तो किसी और के नहीं हो सकते. It's terrible. It's terrible. I remember my character telling her at one point कि तुम्हें इसमें नजर क्या होता है?
तुम्हें क्यों इसके पीछे पड़ी हो, बिल्कुल ही बेकार इंसान है, काम भी नहीं करता. एंड सो शी शोज मी सम इंस्टाग्राम वीडियो के देखें कितना हीरो लग रहा है और कितना. सो आई रन हर डाउन एट दैट पॉइंट, बट आई आस्क्ड देम, लाइक मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, मुझे शमशेर पसंद भी नहीं है. तुम्हें अपनी बहन को क्यों नहीं समझा रही कि मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारो, या तो आप मेरी बहन को एक और लेयर दे दें, दैट शी इज़ अ साइकोपैथ. You know, she has some mental illness. That she's attracted to these kind that of she's men. attracted to this man. Otherwise, there's no reason for her to be attracted to this person. And it gives me a validity that, you know, I'm thinking I give up, I will be with her because isko hai mental illness. Ab kya ho sakta? Magar nahi. But that's like 15 million people who are loving each episode. Nearing 20 million people. That's who they are. They're loving the character. They are basically Sophia. Sophia, yeah, no? Sophia. Sophia. They are basically Sophia reincarnate. So it's Sophia, Shamsher. His character is called Mehak. ये real life characters हैं. Totally. Totally. Story real life story है. Apparently कहानी भी किसी एक incident पे बनी थी. So अब ना मुझे हमेशा ये मसला होता था कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे मैसेज ये देखना चाहते हैं, ये हमारी कहानी है. ऐसा नहीं है हमारी कहानी, आपकी कहानी है नहीं है. मेरी कहानी, अगर असली कहानी मैं अपनी ज़िंदगी की कभी सुनाऊंगी नहीं, लेकिन अगर मेरी आप कहानी देखें उसमें और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. And then I realized, naive as I was, that these are our real stories. This is who we are. For a lot of people, these are the real stories. This is who we are. मगर आप सुनाएंगी क्यों नहीं अपनी कहानी? People don't really know your story. They don't know. They don't. Story. No. And you want to keep it that way. I want to keep it like that. Matlab, why would I? I also like to think that I'd like to gauge my audience. If I see that it's incomprehensible to my audience, why bother at all? You think it would be? Yes. Incomprehensible? Yes. Interesting. Do you think you are incomprehensible? Yes. 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 And so how have you survived in an industry where your kind of actor and your kind of character has no place in our dramas? And an actual real life Ayesha Toor would not be a character in a drama. I wouldn't be, no. She wouldn't be. And if she were like you, she would be the vixen or the homebreaker. That's not who you are. But somebody like you would never be characterized as achhi ladki. How do you grapple and deal with all of that? For years, how have you done it? So, Amna, before this, the project I did was on ARY. I'm forgetting the name. Okay. Right before this. उसके अंदर में एक मजलूम बेचारी, पढ़ी लिखी बट मजलूम बेचारी बीवी थी, जो अपने अगेन टॉक्सिक अब्यूसिव हस्बैंड के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, टू द पॉइंट वेयर शी स्लैशेस हर रिस्ट बिकॉज शी हैज़ नो वे आउट ऑफ दिस मैरिज एंड आउट ऑफ द सिचुएशन. वो भी किया मैंने, वो किसी ने नहीं देखा बिकॉज शायद नहीं देखा, इतना नज़र पॉपुलर नहीं हुआ. This was with there was Ali Khan, Mickey, Mikal, Ali Khan. हम तीन बहन भाई बने हुए होते हैं. Polar opposite of Farwa, and I enjoyed doing that character so much because मैं अपनी असली आंसुओं से रो रही थी, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था. वो भी मैंने किया है. उससे पहले I've done quite a variety of characters, especially from the beginning. But मुझे लगता है कि अब शायद वो वक्त आ गया कि अगर आप डार्क स्किन्ड हैं, आपके बात करने का लहजा थोड़ा सा अलग है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर में, विलनस कैरेक्टर में डाल देते हैं. ऐसा है? Does that actually exist? That happens. That prejudice actually exists? Yes, it does. But then today I was thinking कि main lead हमेशा, and I think this started with Mahira probably because वो हमसफ़र बहुत popular हुआ था, and Mahira is a fair skinned girl, fair skinned, you know, pink cheeks and all. उसके बाद बहुत ज़्यादा लगा, but then I also realized there's Ikra, there's Sajal, Saboor, Sonia, Hussain. Not so light skinned. Not so light skinned. They've done a great job. You know, they're not just surviving, they're thriving. Absolutely. But जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, वो करते हैं. डार्क स्किन और उर्दू का लहजा अलग हो बात करने का. हालांकि मेरी उर्दू इन सबसे बेहतर होती है सेट पे, सबसे अच्छी उर्दू मेरी होती है. बट वो आपको फिर अमीर खातून, और अगर अमीर हैं और थोड़ी सी
बाकी लोगों से थोड़ी सी लंबी हैं, रंग अलग लग रहा है, तो ईवल हैं, विलनस हैं. और पॉश हैं और अमीर भी हैं और वो सब फिर तो कुछ. कहानी खत्म. हाँ, फिर कहानी तो खत्म. कहानी खत्म. फिर तो कोई रिडेम्पशन ही नहीं है. और अगर टैटूज हैं तो फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वो तो इतना बेस लगाती हूँ मैं कि कुछ नजर नहीं आता. Nothing shows. Nothing shows. Nothing shows. So basically, the idea is that the real you leave that person behind Yeah, at home. yeah. Because I think the toughest part of the job is to get to the job. And it's not like in Pakistan, हमारे पास vanity vans हैं, जो Right. इंडिया में हैं. Right. वहाँ पे तो मेकअप रूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. Right. एक ही आप जगह पे होते हैं, 12 घंटे होते हैं. 12 घंटे और रोज़ाना उन्हीं लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है. इट्स इम्पॉसिबल कि आप you know how people say actors tantrums throw करते हैं, Yeah. या it's tough. You can't survive even in the most beautiful house. You're stuck there for 12 घंटे रोज़ाना. It's tough. Yeah. And then you can't be yourself, because being yourself also means language difference. Yeah. Intellect, हर चीज़ अलग अलग होती है, हर किस्म के लोग होते हैं उधर. So you're putting up an act then. Then you go in front of the camera, you're putting up an act then. Then the third act is when you are asking the channels or the production houses for your money. That's 3 different acts. The real you is left far behind. Whereas I feel the main focus should be just that one acting job that you need to do. Absolutely. The paraphernalia should be handled for you and it should be made easy for you. But ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. Because channels भी या जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, they don't want to deal with your managers. They want to deal with you. Yeah. So वो एक शदीद मुश्किल काम है. Payments is such a huge issue. मतलब अभी अच्छी बात ये हो रही है कि एक्ट यूनिफाइड हो रहा है. ब्लेस अतीका एंड ऑल द अदर पीपल, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे. ये वाली लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ेंगी, बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिंग. दैट्स द एग्जॉस्टिंग पार्ट. आई एम नॉट Fighting for your rights is it's exhausting. It's exhausting. And I don't want to, you know, keep calling your accountant or your production Absolutely, people. कि मेरे I पैसे don't, देते हैं, मुझे हाँ. नहीं करना ये, but करना पड़ता है. वो एक और एक्ट होता है. So when you say how am I doing Farwa or dealing with the kind of characters I get, I swear to you that's the easy part. Because you sit down and you bring in your skill and craft if it has value at all. That's my job. Yeah. The rest is the toughest part. And the rest is what you shouldn't have to do. I shouldn't have it to should do. happen in a professional environment automatically. बिल्कुल ऐसा ही है. Also, do you think creatively things have become so tough now because the public at large is not so tolerant? Like talking about Behti Nar, for example, कितने साल पहले वीडियो साकिब मालिक ने बनाई थी for Rashk, right? For Rashk. And it was a very, very groundbreaking, experimental and risque video with Iraj and with Tariq and, you know, with a lot of, I would call it like borderline erotic. It was erotica. Aaj ban sake Behti Nar? Would you agree to be cast in a Behti Nar video today? If I like the song. Yeah, there you go. If I like the song, if I like the people, yeah, I would. हाँ. I would. Because मेरे साथ अच्छी बात ये हुई है कि मेरे ऊपर अब वो प्रेशर नहीं है. हाँ. कि मैं 25 years की हूँ तो मुझे मेन लीड करनी है और मुझे दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ मुकाबला करना है या लोग मुझे देख रहे होंगे. When you do a character role, you can very slyly do a lot of things that your, you know, Dure might not be able to get away with. Absolutely. So what all did you do with Farwa? Or is Farwa, as we see her, exactly how she was presented to you? No. Farwa was so loud. She was so loud, the character that was described to me. Loud और बोलने का लहजा थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा था. I'm like, मैं आपने वो जो छोटी बच्ची दिखाई है किसी की बेटी, वो भी वैसे ही बात करी है, फरवा भी वैसे ही बात करेगी. अगर ZQ का कैरेक्टर एक है वो वैसे बात करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी. And loud. I'm now supposed to be loud. I was like, देखें जितनी दहशत.
आहिस्ता बात करने में होती है, हाँ. चुप रहने में होती है, शक्ल पे एक्सप्रेशन से होती है, वो नहीं आएगी. हाँ. नहीं आयशा जी, इसमें तो चीखना लोगों को पड़ेगा. समझ कैसे आएगा फिर? समझ तो कैसे? चीखेगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा वो अपसेट है? हाँ. हाँ. तो कुछ सीन्स में मुझे चीखना पड़ा है. आई हेट स्क्रीमिंग. मैं असल ज़िंदगी में तो कभी भी नहीं चीखती हूँ. हाँ. हेट इट. फिर मैंने सोचा अगर चीखना ही पड़ रहा है तो फिर खुल के चीखते हैं. क्या? सो फिर थोड़ा खुल के चीखा. बट बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी मर्ज़ी से देख के कुछ नुआंसेस थे. आई डोंट नो इफ़ पीपल कॉट इट और नॉट, बट कुछ नुआंसेस थे जो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और मुझे मज़ा आ रहा था. एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर मैं एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ख़ुद को सीरियसली ना लूँ तो शायद मेरी एक्टिंग बेहतर हो जाती है. एंड आई थिंक इट फॉर मी इट वर्क्स. दैट्स द पार्ट दैट वर्क्स फॉर मी नाउ. I don't bring my own morality into my characters. You can't, right? You can't. But you would still do or agree to do roles that were responsible in the way कि negative है तो negative लगे, positive है तो positive लगे. Confuse ना करे audience को. Confuse नहीं करे. Confuse नहीं करे. Do you watch dramas? No. Do you watch films? I watch films. You watch our films, Pakistani films? Wow, Amna, thanks. No. No. So there are a lot of dramas I wouldn't watch if I didn't have to review them. So that makes complete sense. And the reason why I'm asking you these questions is that sure, Kaisi Teri Khudgarzi is being watched by millions and being loved by millions, but I feel that it's not appealing to maybe the youth or the literate youth or the educated youth. They can't relate to it. And either they're watching it just for roasting value के ये तो बहुत funny है सारा. Otherwise, they would not be able to relate with it. अच्छा, बहुत रोस्टिंग हो रही है इसकी. बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैंने एक क्लिप देखा था. मैंने एक्चुअली कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे जिसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जो लोग बातें लिख रहे थे. And I completely agreed with them. Completely agreed with them कि हाँ है कि a toxic, abusive character. And perhaps Mehak's character should have stood her ground and fought him off. वो मैंने पढ़ा. फिर एक हमारी टेलीविज़न की आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक she talked about the fact that you know it is a toxic character. Totally. I read that. But Amna, again the point is इस साल मैंने 5 महीने कोई काम नहीं किया बिकॉज जो मेरे पास 3 स्क्रिप्ट्स आई थी वो आई कुडंट डू इट. आई जस्ट कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट. एंड अगैन जब आप 5 महीने काम नहीं करते तो आपके फाइनेंसेस, योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल. यू नीड टू वर्क टू पे योर बिल्स. 3 स्क्रिप्ट्स मना कर दी. फिर दिमाग में मेरे आ रहा था अब तो मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं काम के लिए, किसके नखरे इतने हैं. Because this is what we do, we take it personally. Agar if somebody asks you out and you say no, they take it personally. As we see enough on television, As we see it on TV and in real life. And if you refuse a project, they take it personally. फिर उसके बाद 2-2, 3-3 साल तक नहीं बुलाते हैं. तो मैं डर भी गई थी थोड़ा सा कि कितना मना करेंगे आप, किस किस्म की स्क्रिप्ट का मैं इंतज़ार करूँ और कब तक इंतज़ार करूँ. Then खुद को थोड़ी सी तसल्ली मैं ये दे देती हूँ कि जब मैंने अपने करियर के शुरू में काम किए थे वो बड़े मज़े के थे. अब किसी ने देखे नहीं देखे, it's not. Yeah, but you're satisfied as an I'm artist. okay with it. Yeah. Although I think that I've become a slightly better actor now than I was before, because I was too full of myself to be a good actor back then. Right. Now I'm not. Right. Life has humbled me. So I feel that vulnerability comes through in my characters. Even if it's a Farwa character, sometimes you'll see the crack in her personality. And that comes because there was a crack in my real personality. So kahin na kahin मैं उसको डाल देती हूँ. I mean, when Baba Sahab does a shush to her, then she does back off a bit. It's interesting. No, you are a good actor because never once watching Farwa do you think that ये कमज़ोर है, ये तो ऐसी नहीं है. You actually believe that she's like this, which is why that glass of water was so important. You know, for me, somebody like Mehak or Mehak's father, for example, is somebody who's really been criticized a lot. That how is he so spineless? What would you do if your child was in this position or you were in this situation? What would you do? Would you say, "Beta, tumne kya kar lo?" No.
You wouldn't do that. You wouldn't. You would die before doing that. Yeah, you do everything in your power to protect your child. बिल्कुल. अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इतनी रोस्टिंग भी हो रही है सोशल मीडिया पे, बिकॉज मैं कहीं भी जाती हूँ तो आजकल मैं मॉब हो रही होती हूँ, तस्वीरें, I सेल्फीज wanted to ask you, how has it changed your life? How has Kaisi Teri Khudgarzi changed your life as an artist in Pakistan? It's a lot of recognition. It seems like this is the first time I've done something in my life. Yeah. So मैं थोड़ा सा I'm a little shocked because मुझे तो आदत नहीं थी. So वो लोग रोक के, पहले तो मेरा शुरू में मेरा initial reaction होता था क्या, you know, protecting myself, क्या हो रहा है. Now I'm like, oh अच्छा selfie चाहिए, जी शुक्रिया, वो भी कर देती हूँ, but like. Yeah. And you were mentioning that shops you had been going to. I've been going to Zena Market since I was a child, since I was in college actually. तो शॉपकीपर्स जानते हैं, अब तो शक्लें याद हो गई हैं. से बाजी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा. वैसे बड़ी सख्त हैं आप, फरमा भाभी बड़ी सख्त हैं. Thank you. Well, that must feel nice. That feels nice. No, I'm glad. I'm glad for the success it's brought the artists, because I mean, artists deserve it. Yeah, you guys work in really, really hard circumstances. So, ये तो अच्छी बात है. I mean, we don't have that kind of power where we can choose our scripts, where we can. Nobody's a Danny Day-Lewis here who can, you know, will have big films written for just that one artist. Yeah. Nobody has that kind of power here. Then to actually expect the artist to shift the narrative. I'm sorry, where? How can I, or let's take Danish in this instant. How is Danish going to shift the narrative of a toxic, abusive story? Does he have the power? Does he have the financial, solid, I don't know why I'm speaking on his behalf, but I'll talk on my behalf. I don't have that kind of power. I have not seen any actor have that kind of power. जहाँ पे आप narrative ही shift कर रहे हैं एक कॉम का या एक medium का. तो अब आप ये करें या ना करें वो आपकी मर्जी है. वो हाँ, आपने करनी है, आप change कुछ नहीं कर सकते. और जो लिख रहे हैं वो क्या सोच के लिख रहे हैं ये भी, I mean, why would you speak on their behalf? They have to defend themselves. खुद बताएं आप क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों ऐसे लिख रहे हैं. And I feel कि सबसे ज़्यादा पावर तो लिखने वाले के पास होती है, सबसे ज़्यादा. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पावर तो चैनल्स के पास है. वो तो है. Ultimate पावर तो चैनल्स के पास है. लेकिन आप जब आप खुद भी लिख रहे होते हैं, मेरे ख्याल में लिखना हमारी सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ थी वो कंटेंट था एक ज़माने में. बिल्कुल. और अब हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कंटेंट है. चलें कहानी अच्छी नहीं है तो डायलॉग ही एक तरीके से खलील रहमान क्या करते हैं, एक डायलॉग लिख देते हैं ना, उनकी कहानी भी क्या होती है. बिल्कुल. वही टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप. बिल्कुल. थप्पड़ मार दिया तो हुमायूं एकदम से फिर से हीरो बन गया. लाइक दिस जेंटल जायंट वुड नॉट हार्म अ फ्लाई, बट थप्पड़ मार के वो हीरो बन गया. सो वो जुमले अच्छे लिखते हैं, कहानी अच्छी नहीं है तो कुछ करते हैं, कंटेंट अच्छा लिख भी रहे हैं. और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल एक दो ड्रामे आ भी गए पिछले साल, जैसे परिजाद was different and it did really well. So उम्मीद है कि शायद very well change आएगा. Begul writes really well. But then her dramas don't become so popular. They don't become popular. Parizad I'm mentioning because it was different and it was also trending. So दोनों चीज़ें उसको critical और commercial दोनों मिल रही थी. वो बहुत कम होता है. Generally Begul तो critically acclaimed है, but commercially it's successful इतना नहीं होता. I think सबसे अच्छा तरीका ये है कि ज़बरदस्ती अच्छी चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं. चले ना चले, लोगों को ऐसा आदत हो जाएगी. उनको दिखाना शुरू कर दें, बिकॉज रमज़ान ट्रांसमिशंस भी तो हमारे सामने ही शुरू हुई थी. आपने मुफ्त की मोटरसाइकिलें जब बेचनी शुरू की, मुझे भी आप एक गोल्ड बार दे देंगे, I'd be like, I'm going to be there. You teach me to beg, I'll beg. You teach me self-respect and self-esteem and keep drilling it in my head. I'll learn at some point, right? And I really feel that media has a huge responsibility towards its people. Yeah. The channels have a huge responsibility. आप news channels पे तो चलें, जो आप करना चाहते हैं कर लें, but जो आपका artistic content है उसको थोड़ा सा करें. But you can't, please, खुदा के लिए आर्टिस्ट को ब्लेम मत करें. एक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. We can't do anything. We can refuse scripts and sit at home and starve. And we shouldn't. Why should we? Why should you? Absolutely. The responsibility shouldn't fall on your shoulders. True. I don't have the power
Yeah. Ask the people with power what they have been what they're doing with it. Absolutely. कोई एक्टर ये आके नहीं कहेगा कि मुझे आज एक टॉक्सिक रोल करना है, दें लिखे प्लीज खुदा के लिए मेरे लिए लिखें ऐसा कैरेक्टर जिसमें मैं चपेड़े मारूं लड़कियों को और उनको अगवा करूं और yeah, I agree. Okay, that's clear. You've made that clear. Coming full circle to Behtinar again, because I rewatched it, I revisited it when I was going to interview you, and I went back and I was like, oh my God, this content is so explosive and it's touching upon what I see, and of course it's very, very ambiguous and you can read so much into it. Everybody can reflect on it differently. मैंने जब वो देखती हूँ तो I see it now as gender fluidity, which is such a relevant topic now with all that's happening with the trans people all over the world, but also in Pakistan. You must be really proud of that video. Amna, I am. Everything that I've done for Rashk, I'm happy with. Everything, because right after Behtinar, we did a short video because वो गाना छोटा था जो एक comment था military invasion पे, और उसी वक्त America had invaded Afghanistan. Right. So we made that. दोनों बैन हो गए थे. बेहतीनार भी बैन हो गया था और ये दूसरा वाला भी बैन हो गया था. फिर उसके बाद recently I did another video with Rashk, which was more about the non-binary, gender fluidity, a very short video, very non-glamorous, to the point, direct. What's happened with these people now is कि ये चुपचाप अपना काम करके लगा के चले जाते हैं. इनका मकसद ये नहीं है कि आपको अपना काम दिखाएं. आपने देखना है रश का काम तो आप जाके खुद ढूंढें और देख लें. So the last video I did with them was, I feel, more relevant when we talk about the non-binary, binary, gender fluidity, more relevant to that now than Behtinar was. Right. Because Behtinar was highly stylized. It was glamorous. Of course. And then when you have the beautiful Iraj in it. And Tariq Amin and with Saqib directing it. And So this was, I feel like, Deepak doing the clothes, Fifi Harun coaching me, Saqib directing it, Tariq in it, did our makeup. This was a fashion mafia getting together. Absolutely. Yeah. Fun times. All said and done, fun times. Fun times, yes. मगर आज नहीं बन सकेगी ऐसी. I was just recalling like Fiha Jamshed doing a shoot with models wearing military jackets and with torn tights, and वो आज नहीं कर सकेगी. Or a very famous image of Anita Ayub in a burqa on Seaview Beach showing leg for Herald. वो आज नहीं छप सकेगा, वो कोई नहीं करेगा अब. So we're really regressing creatively, and nobody's taking risks anymore at all. Not to say that we essentially agree with a certain point of view or we don't, but it's just that the liberty to say it and tolerance to listen, even if you don't agree, that tolerance doesn't exist anymore. I don't know, Amna. I feel like it's also, ठीक है, tolerance नहीं है, लेकिन आपने बनाया भी क्या फिर जिसके लिए जो आप tolerance create कर रहे हैं. कौन सी ऐसी चीज़ आपने किस चीज़ के against rebel किया है, या आपने कौन सी इतनी बड़ी creativity दिखाई है पिछले 10 सालों में that suddenly you wake up and you're like, my God, that social commentary really shook me up. क्या देखा है हमने, क्या बनाया है हमने. So we can't just blame the people saying कि tolerance नहीं है. वो तो वैसे ही intolerant शदीद society है, शदीद regressive society है. I don't know what's happened and where we are going. I'm thinking floods आ गए तो शायद foreign aid आएगी, थोड़े पैसे आएंगे तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे और दिमाग थोड़े दुरुस्त होंगे. But where the art community is concerned, where we are concerned, I am concerned, what have I done that I can loudly and proudly say that, look, this is what I've done. This is me showing you the mirror. And this is where my need as an artist is fulfilled. I haven't done anything. So I don't know, their regression भी हो रहा है और creativity भी खत्म हो रही है. तो sad situation है बड़ा. Anyway, that's a very gloomy picture to end on. So now I want you to give me some happy news about your life and your career. Okay, happy news. I'm doing a new project with Hum TV. Very excited about it. Okay. Interesting character, single, one-dimensional नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है because मेरे साथ जो actors हैं वो बहुत मज़े के हैं.
वो कर रही हूँ. फिर उसके बाद I'm thinking of writing something very quickly, बहुत ज़्यादा. बट वो इतना शदीद इमोशनलनेस होगा, इतना क्वाइट प्ले होगा, उसमें कोई चीख नहीं रहा होगा, कोई थप्पड़े नहीं मार रहा होगा. ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? हाँ. बट थप्पड़ नहीं कोई मार रहा होगा. हाँ. और कोई ये नहीं बोलेगा कि मम्मी आपने मेरी क्लास देखी है और तुम्हारी क्लास देखी. हाँ. None of that. हाँ. बट कुछ लिखने That's का fun, सोच. हाँ. That must be fun to say. It's so much fun. दो टक्के की लड़की की तो नहीं कहा था खलील रहमान कमर्स डायलॉग. That was Khalil Rahman. I said मुझे भी ना कोई एक लाइन दी थी, दो कौड़ी की लड़की. हाँ. तो मुझसे उस वक्त फ्लो में बोली नहीं जा रही थी. I was like प्लीज कुछ और बुलवा दें. बहुत वो हो गया ऐसा के साथ. कोई नया जुमला दें ऐसे. नया शशका मारे. कुछ नया दें ऐसे जिससे हमारी कौम अगले 2 साल तक मुझसे नफरत करती है. कुछ दे दें. So I don't know what we said. Very good. But fun. But it's been a serious conversation. But underlying fun that we're having with Kaisi Teri Khudgarzi, and congratulations for the newfound fame. And I love it. I'm sure people's sudden realization that you're an actor. I'm an actor as well. Yes. So that's fun to. But now we're going to head upstairs for a fun segment because I do another show and it's called the FIR. And it's basically first impression review, but then we also bring in food products and that becomes food in review. Okay. So now because you're here on behalf of the set and the team of Kaisi Teri Khudgarzi, so I want you to compare the food item to the drama and tell me which ingredient actually resonates as which character and why. Fun. So we're going to have fun and no doom and gloom upstairs. Absolutely not. Not when food is there. Not when food is there. But thank you for coming in and opening up and for also explaining Farwa to people and what's the difference between a negative character and somebody who's confusing people. A toxic portrayed as romantic is not right, but negative portrayed as negative is fine. So ये है. But thank you again. Thank you for having me. मजा आया पहले भी और बाद में भी and I hope we keep meeting and bumping into each other every now and then. Yes. And always. I hope there's another music video at some point that hopefully. Is more reflective of the artist you are. Thank you. I hope so too. Thanks.